श्रीपादसप्तति श्लोकं 31 डोल्हाकेलिषुयं हिमाचलशिला लग्नं वनेवासिनो भक्त्या योगिवरं श्रीपुण्ड्रकलिते लिम्पन्ति बालान्धरे यं सिद्धप्रमता समेत्य तिलकं कुर्वन्ति नत्वा मुगुस् तं दाक्षायणिते कथानुपदयो ऋच्छेयलाक्षारसं श्लोकं 32 देवी त्वं मुरवैरिण प्रणमने यत्किञ्चिदाख्विञ्चय श्रीपादाम्बुजमन्यतास्य शिरसि त्वत्पादलाक्षाञ्चिते श्रीभूम्योरितरप्रणामकृत मित्यन्योन्यमाशङ्गया रोषव्याकुलयोच्छिरं स भगवान् जायेत पर्याकुलः श्लोकं 33 प्रागुत्वाघवितो हिमाचलसदस् यस्मादिरोपाय यन्यस्प्रक्ष्यामि वियन्तु नीमिति पुनः सत्यं विधातुं च यत् दैत्योच्छेबणसागशे विरचिते संवाहनार्थं च यत् तत्पादग्रहणत्रयं विजयते सर्वेण सर्वाणि ते श्लोकं 34 सुम्बस्ते किल देविरागकलहे पादप्रहारोत्सवं लब्धुं काञ्चितवानुपायमिह कल्वज्ञो न विज्ञातवान् यद्यायोच्यत घोरमाहिषव बुद्धारीशवैरी तत प्रागानिष्यदमूर्ध्निकोमलरुचा पादारविन्देन ते श्लोकं 35 आनम्रे गिरिजे पदप्रकरणे दत्ते भवत्यारुषा चूचूनादे किं महिषोऽहमित्यभिहिते देवेन तस्मिन् क्षणे आलिश्वागलिदस्मिदाशु पुनरप्युत्थामपुष्यतृष स्तन्मौलौ जयति त्वदीयमभिते पादाब्जसन्ताडनं श्लोकं 36 पादाक्रं तव शङ्करश्रमवशा दाक्षारिलाक्षारसं विन्यस्तं मृगनायकोपरिचिराज जीयातकेन्द्रात्मजे यत्कान्ध्यैव च लोहितो मृगपधीर्दैत्यप्रहारोत्कलत् रक्ताम्भक्खनिका वहन्नपि तथा नामानि भैमानि कैः श्लोकं 37 नैवालिम्बनिलिम्बमूर्तसुनभा सिंहो बरिध्यज्यतां मा चेदं महिषस्य मूर्ध्नि रभसा तालिभ्य लोलुभ्यतां भद्रे मौलिनदी जले परमितं सञ्चालनीयं द्वये ध्याले केलिगिरो जयन्ति गिरिजे त्वत्पादलाक्षार्पणे श्लोकं 38 नद्वैव प्रथमं त्वदङ्घ्रिकमलं तौ पुष्पवन्दावुभौ त्रैलोक्यं मगशाभिभूय सरतो व्योमान्तरप्रान्तरे नाथे तौ कथमन्यथा परिकलल् लाक्षारचक्षालितौ विच्छेदे पृषचोनि बिम्बमुदया रम्भे प्रियं बाहुगौ श्लोकं 39 त्रैलोक्यं वशयन्ति पापपडली मुच्चाडयन्त्युच्चकैर्
विद्वेषं जनयन्त्यधर्मविषये प्रस्तम्भयन्त्यापत आगर्ष्यन्त्यभिवाञ्छितानि महिष स्वर्वैरिणो मारणात् चित्रं तत्पदचित्तचूर्णनिवः षट्कर्मणां साधकाः। श्लोकं 40 किं कल्पत्रुमपञ्चकं प्रणमथा माघाञ्छितापातने किं पञ्चायुधबाणपञ्चकमिदं मारारिषं मोहने सूक्ष्मं किञ्चन पञ्चभूतवपुषो विश्वस्य किं कारणं त्वत्पादाङ्गुलिपञ्चकात्मकमिदं किं भाति शम्भो प्रिये। ॐ श्रीं मात्रे नमः। आदिपराशक्तिमाता की जय।